Hello and welcome back, guys. Today we're going to be doing O-Level Physics 5054 May June 2021 Paper 1 Variant 2. So before starting, मैं आपको आपके एग्जाम के बारे में बता देता हूँ and a convenient way to study, which is our topical papers. So yeah, let's start. Firstly, about our exams. इस एग्जाम में 40 क्वेश्चंस होंगे and each question will be 1 mark. Total आपके पास 40 marks होंगे in this paper and you have to attempt all of the questions. You will be given 1 hour to attempt this paper और ऑन एवरेज आपके पास 1 मिनट 30 सेकंड होगा फॉर ईच क्वेश्चन। मतलब फॉर एग्जाम्पल आपने ये क्वेश्चन 10 सेकंड में कर लिया, अगला क्वेश्चन आपने इसी टाइम रेंज के बीच बीच में करना है। बिकॉज ना कुछ क्वेश्चंस जो होते हैं दोज आर बिट ट्रिकी। कुछ क्वेश्चंस में आपने अपना दिमाग यूज करना होता है, कुछ क्वेश्चंस में कैलकुलेशंस होती है, कुछ क्वेश्चंस आपकी थ्योरी टेस्ट करती हैं। सो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि ना ही आप ज्यादा तेज करें ये पेपर, ना ही आप ज्यादा आहिस्ता करें, ठीक है ना। तो मूविंग ऑन आवर टॉपिकल पास पेपर्स। हमारे टॉपिकल पास पेपर्स में ऐसा क्या है दैट अ स्टूडेंट शुड बाय इट। हमारे पास पेपर्स ना, देयर जस्ट लाइक एनी लाइक यूजुअल ट्रेडिशनल पास पेपर्स जो आपके पास रीड एंड राइट के होते हैं या रेड स्पॉट के होते हैं। दे आर लाइक एनी अदर पास पेपर्स, बट हमारे पास जो एज है ना, हमारे जो पास पेपर्स होते हैं ना, उनके हर टॉपिक में देयर विल बी अ स्पेसिफिक बार कोड, QR code, and if you scan it, it will lead you to a playlist on how to solve that topic's questions. तो फॉर एग्जाम्पल ये हमारे बुक के अंदर एक QR कोड है और अगर आप इसको स्कैन करोगे इट विल लीड यू टू अ प्लेलिस्ट ऑफ रेडियो एक्टिविटी पेपर 2, ठीक है ना। एंड दैट हैज 23 वीडियोस ऑन इट। हमने उसके ऊपर 23 वीडियोस बनाई है फॉर यू टू सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस इन रेडियो एक्टिविटी। सो या आई होप यू फाइंड दैट helpful or something. If you do, आप हमसे पूछ सकते हैं ऑन इंक्सक्राइब। इंक्सक्राइब दिस इज आवर इंस्टा। अगर आपको ईयरली चाहिए हो, टॉपिकल पैसेज चाहिए हो, कोई भी पैसेज चाहिए हो, यू कैन जस्ट मैसेज अस। सो या, एनीवेज मूविंग ऑन, लेट्स डू द क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1, a student determines the circumference of a football. Which instrument gives the reading that is the circumference of the football? ए, कैलिपर। कैलिपर जो होता है वो बहुत छोटी रीडिंग्स लेता है, सो नो। माइक्रोमीटर, स्क्रू गेज भी बहुत छोटी रीडिंग्स लेता है। रूलर, रूलर जो होता है इट इज अ रिजिड ऑब्जेक्ट। आपके पास अगर कोई रूलर हो आपके घर में, इट इज अ रिजिड ऑब्जेक्ट, इट कैन नॉट बेंड, इट विल नॉट बेंड अराउंड द फुटबॉल। while on the other hand जो टेप है, that seems like the right answer. Why, you might ask? because जो टेप होती है इट इज नॉट अ रिजिड ऑब्जेक्ट। आप इसको फुटबॉल के अराउंड सराउंड कर सकते हो, राइट। फुटबॉल के अराउंड रैप कर सकते हो एंड यू कैन गेट द सर्कमफरेंस ऑफ द फुटबॉल। सो ए इज द राइट आंसर, आई मीन डी इज द राइट आंसर। Question number 2. A coin falls from rest through the air and eventually reaches a constant speed. By constant speed, what do they mean? They mean terminal velocity. और टर्मिनल वेलोसिटी में कौन सी दो चीजें होती हैं इक्वल? वेलोसिटी, टर्मिनल वेलोसिटी में देयर इज नो रिजल्टेंट फोर्स बिकॉज एयर रेजिस्टेंस is equals to the weight. There is a resultant force acting on the coin due to the two forces P and Q shown in the diagram. आपको मैंने मेजोरिटी बता दी है कि कौन सी दो दो फोर्सेस एक्ट करती हैं while the ऑब्जेक्ट इज इन कांस्टेंट स्पीड। बस आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी डायरेक्शन होगी ऑफ द टू फोर्सेस। तो P क्या होगा? P विल बी द एयर रेजिस्टेंस। एयर रेजिस्टेंस, बिकॉज एयर रेजिस्टेंस इज ऑलवेज ऑपोजिट टू द मोशन, ठीक है ना। मतलब अगर एक चीज इस डायरेक्शन में जा रही है तो उसकी एयर रेजिस्टेंस विल ऑलवेज बी इन द अपोजिंग डायरेक्शन। सो दिस इज द एयर रेजिस्टेंस और नीचे वाली वेट क्या होगी? इट विल बी द वेट, ठीक है ना। व्हाट हैपेंस टू द फोर्स P एंड व्हाट हैपेंस टू द रिजल्टेंट फोर्स? फोर्स P का पूछ रहे हैं, मतलब एयर रेजिस्टेंस का पूछ रहे हैं, एंड देर आस्किंग अबाउट द रिजल्टेंट फोर्स बिफोर द कॉइन रीचेज अ कांस्टेंट स्पीड। मतलब अभी टर्मिनल वेलोसिटी रीच नहीं की है, अभी टर्मिनल वेलोसिटी रीच नहीं की है, एंड व्हाट इज हैपनिंग विद द टू फोर्सेस, एयर रेजिस्टेंस एंड द रिजल्टेंट फोर्स।
रिजल्टेंट फोर्स और एयर रेजिस्टेंस के साथ क्या हो रहा है, तो मैं आपको पूरी कहानी बताता चलता हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी मेक अ कॉइन। मैं एक कॉइन बना रहा हूँ। ये एक कॉइन है, ठीक है ना। सो एक सेकंड बस, ये बन गया। तो इनिशियली जब आप एक चीज को छोड़ते हो ना, द ओनली फोर्स एक्टिंग ऑन दैट थिंग इज द वेट। अगर आपने एक ऊंची बिल्डिंग से कोई चीज छोड़ी है, द ओनली फोर्स एक्टिंग ऑन दैट थिंग इज द वेट। Because in order for us to get a air resistance, a value of air resistance, हमारे पास speed होनी चाहिए। The only thing the air resistance depends on is the speed and the surface area. Initially जब आप फेंकोगे इसको, the only weight which is acting is the only force which is acting is the weight. And in and जब आहिस्ता आहिस्ता जो चीज है वो एक्सेलरेट करेगी और उसकी स्पीड ज्यादा होगी, the air resistance will start to increase. The air resistance will start to increase and increase and increase, and eventually the air resistance will be equal to the weight, and there will be no resultant forces. ठीक है ना? There will be no resultant forces because the two forces are equal to each other. तो अब आप मुझे देख के बताएं what is happening to the air resistance and what is happening to the weight. I mean, what is happening to the resultant force? First of all, what is happening to the air resistance? The air resistance is increasing because the speed is increasing of the object. And what is happening to the resultant force? Resultant force initially बहुत ज्यादा था because the only force which was acting was the weight. But आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे air resistance add up हुई है, the air resistance becomes equal to the weight, and the resultant force must be decreasing for the air resistance to be equal to the weight. So apparently C is the right answer. Question number 3. The diagram shows the forces acting on four identical solid blocks. Each arrow represents a force of 20 newtons. Which blocks are in equilibrium? So first of all, we have to determine कि क्या conditions होती हैं for a object to be in equilibrium. For an object to be in equilibrium, there must be two conditions fulfilled. एक होती है resultant force should be zero, और दूसरी होती है resultant moment should be zero. हम मोमेंट कैसे देखेंगे? मोमेंट हम लाइन ऑफ एक्शन से देखेंगे, ठीक है ना। फॉर मोमेंट टू बी जीरो, द लाइन ऑफ एक्शन शुड बी अलोंग द फोर्सेस। मतलब जो लाइन ऑफ एक्शन है, इट शुड बी अलोंग द टू फोर्सेस ऑफ पी। पहले पी का हम मोमेंट देख लेते हैं। पी का मोमेंट में हमें नजर आ रहा है कि जो लाइन ऑफ एक्शन है, इट इज गोइंग अलोंग बोथ ऑफ द फोर्सेस। मतलब इसकी जो मोमेंट है दैट इज जीरो। अब इसकी हम फोर्स डिटरमिन करते हैं। फोर्स हम कैसे डिटरमिन करेंगे? जब दो फोर्सेस होते हैं एंड दे आर इन अपोजिंग, व्हाट डू यू कॉल इट, डायरेक्शंस। व्हेन टू फोर्सेस आर इन opposite directions, they subtract subtract like the diagram I have shown you. ये दो forces जो है they are in opposite directions, so उनका जो resultant force है that is zero. तो ये जो दो forces है they are in opposite direction, and दोनों forces 20 न्यूटन के हैं, तो 20 minus 20 is zero. So इनका resultant force भी zero है, तो P is one of our options, ठीक है ना। P is one of our options. P is the right option. अब पहले हम R और S कर लेते हैं, then I will tell you about the Q, which is the main problem child here. ठीक है ना। इसको डायग्राम को थोड़ा सा इधर कर देते हैं, so we have a bit of space to work with. ठीक है ना। So yeah, R देख लेते हैं। R is also abiding by the rule के जो दो opposite forces है, like in opposite direction but same in magnitude, उनका जो resultant force है that is zero. तो P and R is the answer, which is A. लेकिन मैं आपको फिर भी S और Q समझा देता हूँ। S जो है, जैसे आप देख रहे हैं इन द सेकंड एग्जांपल,
अगर दो फोर्सेज हैं दे आर इन द सेम डायरेक्शन, वो फोर्सेज ऐड हो जाती हैं, तो एस का रिजल्टेंट फोर्स कितना होगा? इट विल बी 20 + 20 विच इज 40. 40 न्यूटन इज द टोटल रिजल्टेंट फोर्स ऑफ एस. और क्यू विच इज अ मेन प्रॉब्लम चाइल्ड, जो बच्चे समझेंगे ना, वो कह रहे हैं कि दो फोर्सेज हैं, दे आर एक्टिंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शंस, तो इनका रिजल्टेंट फोर्स शुड बी जीरो, विच इज ट्रू. बट दे हैवंट टेकन द मोमेंट इनटू अकाउंट. जो मोमेंट होता है ना, इट इज डिटरमिन्ड बाय द लाइन ऑफ एक्शन. इसकी लाइन ऑफ एक्शन आप देख रहे हैं, इट इज इन द सेम. इसकी भी देख रहे हैं, इट इज द सेम. बट अगर आप इसकी देखें, इट इज नॉट द सेम, राइट? सो for the moment to be zero, the line of action should be along the forces, and here we can clearly see they are not along the forces, therefore it has moment. और इसकी मैंने आपको कुछ एग्जांपल्स दिखाई हुई हैं. लाइक ये देखें, अगर आपने एक स्टीयरिंग व्हील पकड़ा हुआ है, आप उसको साइमल्टेनियसली एक ऊपर फोर्स दे रहे हो, एक नीचे फोर्स दे रहे हो, दैट डजंट मीन कि आपका जो स्टीयरिंग व्हील है, दैट दैट हैज जीरो रिजल्टेंट मोमेंट, राइट? इट जस्ट मीन्स दैट द स्टीयरिंग व्हील इज रोटेटिंग. अगर आप अपने साइकिल के पेडल्स को देखो, एक फॉरवर्ड है, एक बैकवर्ड्स है, बट दैट डजंट मीन इट हैज कम टू अ हॉल्ट, दैट मीन्स इट इज स्टिल मूविंग. और अगर आप अपना नल देख लो, अगर आप नल को घुमा रहे हो, आप एक तरफ से राइट की तरफ व्हाट यू कॉल इट फोर्स अप्लाई कर रहे हो, और एक तरफ से लेफ्ट की तरफ फोर्स अप्लाई करो, एंड इट इज क्रिएटिंग अ रोटेशनल फोर्स, which does not, it katan doesn't mean that it does not have any moment. So this was the problem child, and it has a moment, therefore it is not in the equilibrium. So let's move on. Question number 4. A student lists three changes that affect the stopping distance of a car: increasing the braking force, increasing the friction between the tires and the road, increasing the speed of the car. Which change or changes increase the stopping distance? तो स्टॉपिंग डिस्टेंस हमारा जो होता है, दैट कंसिस्ट ऑफ थिंकिंग डिस्टेंस. मतलब जितना आप टाइम में थिंक करते हो, उस टाइम में आपकी गाड़ी तो चल ही रही होती है ना, एंड इट इज द अमाउंट ऑफ डिस्टेंस इट कवर्स व्हाइल यू थिंक अबाउट स्टॉपिंग. ठीक है ना? एंड ब्रेकिंग डिस्टेंस, जो जब आप अपना पाँव दबाते हो ब्रेक पे, राइट, अपना पाँव रखते हो ब्रेक पे, एंड द अमाउंट ऑफ डिस्टेंस यू ट्रैवल ड्यूरिंग दैट ब्रेकिंग पीरियड इज द ब्रेकिंग डिस्टेंस. ठीक है ना? So you have to agree that if either of the braking distance or the thinking distance increase, the stopping distance will increase as well. ठीक है ना? तो अब हमने देखना है कि इनमें से कौन सा इंक्रीज हो रहा है, एंड वेदर द स्टॉपिंग डिस्टेंस इज इंक्रीजिंग. ठीक है ना? फर्स्ट ऑफ ऑल, इंक्रीजिंग द ब्रेकिंग फोर्स. जब आप ब्रेकिंग फोर्स को इंक्रीज करोगे, व्हाट विल हैपन इज दैट यू विल ब्रेक इन a large a smaller amount of time. जब आप ब्रेक जल्दी कर जाओगे, what will happen is that your braking distance will go down, and when your braking distance goes down, your stopping distance will go down as well. ठीक है ना? Increasing the friction between the tire and the road. When you increase the friction between two surfaces, the braking distance is reduced automatically, because आपको ब्रेक करने के लिए एक ही चीज चाहिए होती है, दैट इज फ्रिक्शन, राइट? आपको फ्रिक्शन चाहिए होती है. And when you increase that friction between the tire and the road, what you will indirectly do is that you will decrease the braking distance. So that will decrease the stopping distance as well. Increasing the speed of the car. When you increase the speed of the car, what you will do is that जब आप एक हायर स्पीड पे जा रहे होते हो, आपको पता है ऑफ कोर्स आपका ब्रेकिंग डिस्टेंस जो होता है, दैट इज इंक्रीज्ड एज वेल, राइट? So yeah, that is gonna be our answer. 3 and only D is the answer. Because जब आप एक higher speed पे जा रहे होते हो, you need a larger amount of time to brake, and when you need a larger amount of time to brake, automatically आपका जो braking distance होता है, that increases. Question number 5. The diagram shows a satellite orbiting a planet at a steady speed. In which direction does the resulting force act on the satellite? Whenever an object is moving in a circular path, the resultant force is always towards the center of the direction of travel. ठीक है ना? So A is the right answer. This is the most repetitive question जो MCQs या आप कह लो theory में भी आता है. Question number 7. Air is trapped in a cylinder by a piston. The piston is moved inward so that the volume of the air reduces.
The density of the air in the syringe at initial volume is 0.0012 grams per centimeter cube. What is the density of the air in the syringe at final volume? So basically, what they have told us is that the volume is halved. How did I find that out? Because पहले जो हमें divisions नजर आ रही थी, 4 divisions नजर आ रही थी पहले हमें, and after the compression सिर्फ 2 divisions रह गई है. So the volume is halved. समझ आ गई? And now we have to determine what the relationship with the density and volume is. Density और volume का relationship क्या है? Density is equals to mass divided by volume. Volume is in the denominator, therefore density and volume are inversely proportional. Density and volume are inversely proportional. That means if the density decreases, the volume will increase. समझ आ गई? If the density decreases, the volume will increase. Right? तो अभी हमें क्या नजर आ रहा है? That the volume is half. That means that the density should should double. समझ आ गई? And what does the answer seem like? It seems like C. Because if you multiply 0.0012 by 2, you will get 0.0024 grams per centimeter cube. ठीक है ना? And yeah, अगर आप ऐसे भी देखें, राइट, डेंसिटी आपके पास है 0.0012, 0.0012, एंड मास आपके पास है x. मास इज नॉट चेंजिंग, मास को आप इक्वेशन से निकाल दो, राइट. मास x है और उसको आप एक ऐसी वैल्यू के साथ डिवाइड करोगे विच वाज प्रीवियसली 1, लेकिन आप मास को आप डिवाइड कर रहे हो 0.5 से. व्हाट विल यू गेट द आंसर? यू विल गेट डबल द आंसर, राइट. सो या, दैट इज द लॉजिक बिहाइंड इट. So question number 8. Some forces are applied at different distances from a pivot. So हमारे पास pivot जो है that is same, right? Which diagram shows the force that produces the largest moment? What is the equation of moment? Moment is equals to force into perpendicular distance. Perpendicular distance. Perpendicular distance. Distance from the pivot. ठीक है ना? फोर्स हमारे पास आ गया है, पहले वाले का देख लेना, 50. 50 कर लेते हैं, 50 मल्टीप्लाइड बाय 0.9. Why did I take 0.9? Because I have converted them into meters. तो 90 centimeters is 0.9 meters, 50 centimeters is 0.5 meters, and the rest are in meters anyways. So 0.9 that will be equal to 45. आगे देख लेते हैं, b देख लेते हैं, that will be 2 multiplied by 30, that will be 60. And आगे देख लेते हैं, that will be 0.5 multiplied by 80, which is 40, I think. 40. And आगे देख लेते हैं, 3 into 18, which is 54. 3 into 18, which is 54. So आपको सबसे लार्जेस्ट आंसर कहाँ नजर आ रहा है? इट इज ऑब्वियसली B. So B is the right answer. Question number 9. The diagram shows a children's wooden play tower. Which change to the tower makes it more stable? In order to make something more stable, there need to be two factors that should be accounted. The surface area of that object should be maximum, and the second one should be the center of mass be the should be ideally at the lowest point. ठीक है ना? आप ये दोनों क्वालिटीज देख सकते हैं किसमें? आवर एंशियंट स्ट्रक्चर्स, आवर एंशियंट मैन मेड स्ट्रक्चर्स विच आर द पिरामिड्स. एंशियंट टावर्स वगैरह जो है
उनका जो बेस होता है दैट इज ऑलवेज द लार्जेस्ट, और ऊपर जाते जाते दे रिड्यूस द सरफेस एरिया रादर देन इंक्रीजिंग द सरफेस एरिया। समझ आई? So that is one hobby, or you can say that is why that the pyramids have stayed so long, right? Earthquakes आते हैं लेकिन pyramids कभी शेक होकर टूटे नहीं। That is because उनका जो center of mass है, जो उनका majority of the mass है that is in the lower section, और उनका बहुत थोड़ा mass है जो ऊपर है, और उनका जो surface area, जो largest surface area वो नीचे है। तो देख लेते हैं, मेक द टावर नैरोअर, नो, मेक द टावर टॉलर, दैट वुड डिक्रीज द सेंटर ऑफ मास, दैट वुड डिक्रीज द स्टेबिलिटी, lowering the center of mass, that is the right answer, higher, raising the center of mass will make something less stable. Question number 10, where on the graph is the limit of proportionality for an elastic solid? अच्छा, अभी मैंने आपको एक डायग्राम दिखाया है, यू कैन सी एट दिस डायग्राम, आपने एक अनस्ट्रेच स्प्रिंग देखा है विच इज एट द पॉइंट ओ, आपने उसके ऊपर एक्स अमाउंट ऑफ फोर्स अप्लाई की है और वो प्रोपोर्शनली एक्सटेंड हुआ है द स्प्रिंग, फिर आपने उसके ऊपर और फोर्स अप्लाई किया है जिससे वो और एक्सटेंड हुआ है, बट आप एक इसको इस पॉइंट पे ले गए हो कि जो लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है वो रीच कर चुकी है, एंड नाउ नाउ दैट द further load, or what do you call it, force which is being applied will not be proportional to the extension. So that is what the limit of proportionality is. From O to P, जो ग्राफ था बिटवीन द एक्सटेंशन एंड द लोड दैट वाज प्रोपोर्शनल, राइट? मतलब जितना आप लोड ऐड करोगे उतनी प्रोपोर्शनली एक्सटेंशन होगी, लेकिन लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी तब रीच हुई है जब आप उसके ऊपर इतना फोर्स लगा देते हो कि वो डिफॉर्म हो जाता है एंड इट स्टार्ट्स टू एक्सटेंड अनप्रोपोर्शनलिटी, अनप्रोपोर्शनली, ठीक है ना? आपने ये कभी कभार देखा होगा कि आप अपना जो पेन होता है उसके अंदर से इरेजर निकाल के, आई मीन स्प्रिंग निकाल के उसको इतना स्ट्रेच कर देते हो कि वो टूट जाए, एंड दैट point is reached at the point P. So B is the right answer. Question number 11. A weight of 2 newtons is hung from a spring. The extension produced is 6 centimeters. The 2 Newton weight is removed and 8 Newton weight is hung from the spring. The spring does not reach its limit of proportionality. What is the new extension of the spring? So for that, we'll use the formula F is equals to Kx, where the F is the force in newtons, the K is the spring constant, और जो X है it is the extension. पहले वाले में हमने कितना फोर्स अप्लाई किया था? It was 2 newtons, and the K will be written as it is because हमने निकालना है वो अभी, multiplied by X which is the extension which is 6. तो 6 हमारे पास ये आ गया, तो 2 divided by 6, 2 divided by 6 is the answer, which is the spring constant, और स्प्रिंग कांस्टेंट हमारे पास आ गया 0.333. नाउ वी कैन यूज दिस फॉर्मूला अगेन. हाउ? अब हम निकालेंगे द एक्सटेंशन, ठीक है ना? तो अब हमारे पास है द ओल्ड वेट, राइट? 8 फोर्स आ गया हमारे पास, और उसके बाद हमारे पास स्प्रिंग कांस्टेंट क्या है? 0.3333 मल्टीप्लाइड बाय द एक्सटेंशन विच वी हैव टू फाइंड आउट. So 8 divided by 0.333 is our answer, which is 24. 24 is the answer. ठीक है ना? So we can do this another way, और वो way है कि we can like use the proportionality of them, right? Because जो हमारे पास force है, it is directly proportional to extension. Therefore, if we divide them, force divided by extension will be 2 divided by 8. I mean 2 divided by 6, and we equate that to 8 divided by the extension which was x, we will still get the same answer. ठीक है ना? And that would be practically 24 centimeters again. So yeah, it does not matter the technique unless the overall idea is correct, because अगर हम उसको rearrange करते, that would have been the same 0.333 जो spring constant हमने निकाला था. ठीक है ना? But this was a relatively easier approach. Question number 12. An object is placed at a depth d below the surface of a liquid of density rho. Of which expression does the pressure on the object depend?
अच्छा, प्रेशर हमें पता है, प्रेशर इज इक्वल्स टू रो विच इज डेंसिटी इंटू जी विच इज ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ, जी लिख देते हैं, रो जी एच विच इज हाइट, ठीक है ना। डेंसिटी और हाइट पे डिपेंडेंट है द प्रेशर, बिकॉज जो जी है हमारे पास, जी इज अ कांस्टेंट, ठीक है ना। जी इज अ कांस्टेंट, देयरफॉर इट विल नॉट चेंज, एंड द ओनली थिंग्स विच इज डिपेंडिंग ऑन द प्रेशर इज द डेंसिटी एंड द हाइट, और हाइट को हम डेप्थ भी बोल सकते हैं, सो यू कैन राइट हाइट एज डेप्थ एज वेल विच इज डी, ठीक है ना। तो डेंसिटी विच इज रो and depth, which is d, multiplied by each other. D into rho is the answer. Question number 13. The diagram shows the dimensions of a box of mass m and weight w at rest on a table. What is the pressure on the table due to the box? What is the formula of pressure? Pressure is equals to force divided by area. अब आप सोचते होंगे हर दफा ये प्रेशर का दूसरा फॉर्मूला यूज करके बोल देता है व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ प्रेशर। ये मसला नहीं है कि आप प्रेशर का दूसरा फॉर्मूला यूज करो या पहला फॉर्मूला यूज करो, इट इज द वैल्यू यू बिन गिवन। अगर आपको एरिया गिवन है और आपको फोर्स गिवन है, you're gonna use the appropriate formula which is a force divided by area. अगर आपके पास डेप्थ गिवन है या हाइट गिवन है एंड आपके पास डेंसिटी गिवन है, so you're gonna use the appropriate formula, right? So yeah, force divided by area. What is the force? What is the force? Is mass a force or is weight a force? Weight is a force. Mass is never a force. And what is the area? Area is z into y. अगर हम z into y into x कर दें, we will get the volume. अगर हम into z into y करें सिर्फ, we will only get the area. तो zy is the pressure. तो किस में हम देख सकते हैं? तो ये w हमारे पास w ऊपर है, ठीक है ना, एंड जी वाई जी लिखा हुआ है, जी वाई लिख दो, इट इज द सेम थिंग, डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, विच ग्राफ शोज द रिलेशनशिप बिटवीन प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑफ अ फिक्स्ड मास ऑफ गैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर। अच्छा, प्रेशर और वॉल्यूम किस तरह से प्रोपोर्शनल है? आर दे इनवर्सली प्रोपोर्शनल और आर दे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल? ये बता दें। प्रेशर एंड वॉल्यूम आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का ग्राफ कैसा होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल का ग्राफ ऐसा होता है? नो, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का ग्राफ ऐसा होता है, इट इज अ वेरी कॉमन ग्राफ। तो ये आपने याद कर लेना है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का कभी भी आपसे ग्राफ पूछे, इट विल लुक समथिंग लाइक दिस। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ग्राफ अगर कभी भी आपसे पूछे, इट विल लुक समथिंग लाइक दिस। समझ आ गई? सो बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15, a very easy question. The work done by a force F on a body is calculated by multiplying F by the quantity Q. What is Q? तो work done का फॉर्मूला क्या होता है? Work done is equals to force into distance. Force into distance. लेकिन it is incomplete. Force हम ले लेते हैं, force को as it is लिख देते हैं, बस कौन सा distance लेंगे हम? हम distance लेंगे, distance parallel to the direction, direction of force. और ये भी लिख सकते हैं डिस्टेंस विच, एक्चुअली ये लिखते हैं डिस्टेंस इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स पैरेलल टू द फोर्स, इट इज द सेम थिंग। अच्छा, आगे क्वेश्चन नंबर 16, अ गर्ल लिफ्ट्स एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 1 किलोग्राम फ्रॉम द फ्लोर एंड पुट्स इट ऑन द ledge 2 meters above the floor. How much potential energy is gained by the object? Gravitational field strength is equal to 10 newtons per kilogram. सो आपको हमसे पूछा हुआ है हाउ मच पोटेंशियल एनर्जी इज गेन बाय द ऑब्जेक्ट। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है? जीपीई का फॉर्मूला क्या है? जीपीई इज इक्वल टू एम जी एच। हमारे पास मास कितना है? इट इज 1। जी हमारे पास कितना है? दैट इज 10। और एच हमारे पास कितना है? दैट इज 2। वेरी इजी क्वेश्चन एंड 20 जूल्स विल बी आवर आंसर। सो या, डी इज द राइट आंसर। Question number 17. A copper rod is heated at one end. Which statement describes how the heat transfer occurs in the copper? जो कॉपर रोड होता है ना, इफ इट इज हीटेड एट वन एंड,
कॉपर और प्राइमरीली जो हीट ट्रांसफर करता है ना, इट इज फ्रॉम द एनर्जेटिक, द हीट ट्रांसफर in copper rod slash metals is mainly through the movement of free electrons. इलेक्ट्रॉन्स की वजह से जो वो होती है हीट ट्रांसफर होती है, बिकॉज जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं दे गेन काइनेटिक एनर्जी एंड इन द हॉटर एंड वो मूव करते हैं टुवर्ड्स द कूलर एंड कैरिंग द हीट विद देम, ठीक है ना. दिस इज द प्रोसेस नोन एज कंडक्शन. So let me sum it up for you. When the energetic electrons, when they gain energy, they move from the hotter end to the cooler end. They would never move from the cooler end to the hotter end. That just doesn't make sense, right? So yeah, throughout free movement, energetic molecules move from no. Energetic copper molecules again no. Free electrons move from cooler end to the hotter end no. They move from the hotter end to the cooler end. Therefore, D is the right answer. Question number 18. Which heat transfer process do not require a medium? Conduction. Conduction requires a medium which is mainly through solid. ठीक है ना? Conduction occurs mainly through solids. Convection. Convection occurs mainly through fluids. फ्लूइड्स में क्या आता है? फ्लूइड्स में आता है गैस एंड लिक्विड, ठीक है ना. सो इट डज नीड अ मीडियम. रेडिएशन में कोई मीडियम नहीं चाहिए होता. रेडिएशन में इट रेडिएशन कैन लाइक pass through vacuum or vacuum is not a medium. Conduction and radiation no. Question number 19. A list shows four physical property: mass, resistance, voltage and volume. How many of these properties can be used to measure temperature? Mass cannot be used to measure temperature because कोई direct link ही नहीं है between mass and temperature, right? So yeah, आगे resistance देख लेते हैं. Resistance, although resistance जो है it is a very interesting. Resistance और temperature के बीच में there is link. How you might ask? That is because of the thermistor. जब आप thermistor का temperature increase करते हो, what happens to the resistance? Resistance decreases, right? So yeah, there is a link between the resistance and the thermistor. I mean resistance and the temperature. Voltage. Voltage जब आप use करते हो what you call it thermocouple, it uses voltage as well. So yeah, वोल्टेज भी होता है. वॉल्यूम. जब भी आप एक मास कुछ चीज को आप हीट अप करते हो, राइट, इट चेंजेस स्टेट्स और इट एक्सपैंड्स, राइट. तो वॉल्यूम एक्सपैंड्स, वॉल्यूम इंक्रीजेस एज द temperature increases. So there is a direct link between temperature and volume because volume increases as the temperature increases. So 3 is the answer. C is the right answer. Question number 20. The diagram shows a clinical thermometer. Which factor affects the sensitivity of the thermometer? We can see the mercury, constriction, bore, glass tube. The diameter of the bore. This is a very common question. The diameter of the bore affects the sensitivity. ठीक है ना. अगर आप उसके बोर को नैरो कर दोगे, if the bore is narrow, it is more sensitive, and if the bore is wide, it is less sensitive, ठीक है ना. Question number 21. Which statement about thermal expansion of solid, liquids and gases are correct? ठीक है ना. Liquids do not expand. Liquids do expand. Who told you liquids do not expand? Liquids expand more than gases. No, liquids do not expand more than gases. First of all, let me state down the order of how they expand. सबसे ज्यादा जो expand करते हैं ना, that is the gas. Gas expands the most. उसके बाद liquid, उसके बाद solids. ठीक है ना. Solids सबसे कम expand करते हैं. So B. Liquids expand more than gases. No. Liquids expand less than gases. C. Liquids expand more than solids. That is correct. They expand more than solids, but less than gases. Liquids do not expand. Yeah. Liquids expand less than gases. That is correct. C is the right answer. Question 22.
Which row describes the shape of a liquid and the arrangement of its molecules? Shape और arrangement of the molecules. जो liquid होता है, it takes the shape of the container, as we all know, right? अगर आपके पास एक पानी का ग्लास है, you can just easily like आप उसको टी पॉट में डाल दो फॉर एग्जाम्पल, राइट? इट विल टेक द शेप ऑफ द टी पॉट. And arrangement of the molecules. Arrangement of the molecules of a liquid is not regular, right? You can see that. They move around. While solid के जो होते हैं, that is regular. और जो liquid होता है, it has a random arrangement. Question 23. Air in a sealed container of fixed volume is heated. The pressure of the air increases. How do the molecules of air cause this increase in pressure? अच्छा, आपके पास एक कंटेनर है, कंटेनर के अंदर कुछ पार्टिकल्स हैं और उसको आपने हीट कर दिया है. When you heat a container, what you're doing is that you're providing the system with energy. And when the particles have energy, they will move faster. And when the particles move faster, they will hit the container more. ठीक है ना? So let's see the options. A. The molecules expand and push on the container with a greater force. The molecules do not expand. The molecules move faster. The molecules move at the same speed. No, the molecules move faster and hit the container more often. That could be the answer. The molecules move further apart and hit the container more. No, the molecules hit each other more and they hit the container more. So, yeah, let's move on. Question number 24. A ray of red light in air enters a semicircular block. Which diagram shows the partial reflection and refraction of the रे रे ठीक है ना? तो ए में, अब पहले हम सब में इन सब में पहले एक नॉर्मल बनाएंगे. नॉर्मल किसी प्रोमिनेंट कलर से बना लेते हैं, रेड से बना लेते हैं नॉर्मल. तो ये हमने इसका नॉर्मल बना लिया है, ये हमने नॉर्मल इधर बना लिया है, और एक और नॉर्मल बना लेते हैं. एक सेकेंड, सॉरी, ये क्या हुआ? अच्छा, एनीवेज, एक हम ये नॉर्मल बना लेते हैं और अब एक हम ये नॉर्मल बना लेते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स लुक एट रिफ्लेक्शन. रिफ्लेक्शन में क्या होता है सीन? रिफ्लेक्शन में द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, राइट? तो किस किस डायग्राम में हमें नजर आ रहा है द एंगल ऑफ इंसिडेंस बीइंग इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन? नॉट इन ए, नॉट इन बी, बिकॉज इधर जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है that is larger than the angle of reflection. Only in C and D we can see that the angle of incidence and angle of reflection are the same. So it's either C or D. अच्छा, आगे चलते हैं. Now let's look at refraction. अब एक I'll tell you one another thing कि whenever the ray of light moves from a denser medium to a rarer medium, what happens is that ray of light will move the ray of light will move away from the normal. तो कहाँ में नजर आ रहा है द रे ऑफ लाइट मूविंग अवे फ्रॉम द नॉर्मल? सी में? नो, सी में इट इज गोइंग क्लोजर टू द नॉर्मल, ठीक है ना? एंड डी में वी कैन सी इट गोइंग अवे फ्रॉम द नॉर्मल, सो डी इज द राइट आंसर. आगे चलते हैं. Question 25. An object of height 1.5 centimeter is placed in front of a converging lens of focal length 2 centimeters. The arrangement is shown on the full scale ray diagram. What is the linear magnification produced by the lens? Linear magnification का formula क्या होता है? Mag. इसका formula होता है image height divided by object. अच्छा, image का क्या height है? Since we can see कि 1 सेंटीमीटर इतना एक ब्लॉक होता है, तो 1 2 3 4 5 एक हो गया, 1 2 3 4 5 ये दूसरा हो गया, और ये तीसरा हो गया. सो 3 सेंटीमीटर टॉल है इमेज, और as we can see the height of the object is already given, which is 1.5, and the linear magnification is 2. A is the right answer. Question 26. In which optical instrument is the distance between the object and the lens less than the focal length of the lens?
Acha, this seems like the magnifying glass. Easy enough. Let's move on. Question 27. Which two waves are components of the electromagnetic spectrum? Light and sound. Sound is not the component of an electromagnetic spectrum. Electromagnetic spectrum में सिर्फ transverse waves होती हैं. Which and sound is a longitudinal wave. Water waves, no. Infrared, yes, हो सकती है. It is in the electromagnetic spectrum. Ultrasound is not in the electromagnetic spectrum, while X-rays and microwaves both are in the electromagnetic spectrum. Therefore, D is the right answer. Question 28. The sound from a ship is reflected by a cliff. An echo is heard by a sailor on the ship 4 seconds after the sound is made. The speed of sound in the air is 320 meters per second. How far is the cliff from the ship? So they are saying the echo is heard by a sailor in the ship. मतलब क्या हुआ है साउंड वेव के साथ? साउंड वेव गई है from the what do you call it ship. It hits the cliff and comes back. और इस पूरे प्रोसेस में 4 सेकंड लगे हैं. अगर इस पूरे प्रोसेस में 4 सेकंड लगे हैं तो एक साइड के रास्ते में कितना टाइम लगा है? पूरे प्रोसेस में 4 सेकंड लगे हैं. एक साइड के रास्ते में 2 सेकंड लगेंगे. ठीक है ना? And they have told us the speed of sound in the air is 320 meters per second. So we can easily apply the formula speed is equals to distance by time, which will give us the which will give us the distance. तो हमारे पास स्पीड है 320 is equals to distance divided by time, which is 2. So 2 into 320 is 2 into 320 is equals to 640 meters. So yeah, that is our answer B. Question number 29. Students are asked for the uses of ultrasound. Suggest three suggested uses for ultrasounds are cleaning jewelry, which is correct, tanning on a sunbed, incorrect, or obtaining an image for an unborn baby. That is also correct. Suggest which are correct. P and R are correct. B is correct because अल्ट्रासाउंड आपने सुना ही होगा कि बच्चा जब होने वाला होता है या किसी को शक होता है या you have suspicions कि बच्चा हो रहा है, then you get an ultrasound. और ज्वेलरी क्लीनिंग के लिए तो ये आपको खुद ही याद होना चाहिए. Question number 30. End X of a metal rod attracts the north pole of a compass needle. Which statement about the rod is correct? A. It is made of copper. Copper is not a magnetic material. Therefore, A and B are incorrect. C. It is made of steel. That is not initially magnetized. This could be the answer. D. It is made of steel with a north pole at X. North pole and north pole will not attract. Like poles do not attract. Therefore, C is the answer. It is made of steel that is not initially magnetized. Question number 31. A positively charged rod is held close to an insulating metal sphere. The metal sphere is earthed, as shown. The earth connection is removed and then the rod is removed. Which diagram shows the charges on the sphere after the rod is removed? First of all, initially जो हमारे पास charges थे, जब हमारे पास rod आएगा near the what do you call it the metal sphere, all the negative particles will go near the rod, right? And all the positive particles will go in the opposite direction of the rod because जो like charges होते हैं they repel और जो unlike charges होते हैं they attract. Therefore, the positive will attract the negative and the positive charges will go on the opposite side of the metal sphere. And अब आएगा अर्थ वायर का रोल. अर्थ वायर क्या करेगा? Since there are a lot of positive particles on this side, earth wire will bring in the negative charged particles and the negatively charged particles will come inside the metal sphere and they will cancel out the positively charged particles. So there will be no longer any positively charged particles. ठीक है ना? So अब उन्होंने अर्थ वायर भी हटा दी है और अब उन्होंने क्या किया? अर्थ वायर भी हटा दिया और उन्होंने रॉड भी हटा दिया. So we're only left with negatively charged particles. और जब negatively charged particles होंगे, only inside the sphere the negatively charged particles are left. जो negatively charged particles हैं, they will evenly spread out throughout the sphere because like charges repel and they will try to go as far as possible from each other. So C is the appropriate answer.
because all will be left with is negative particles, और negative particles evenly spread out हो जाएंगे once the rod is removed. अच्छा आगे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 32. द डायग्राम शोज अ सर्किट. द ammeter has four different range settings. Which range gives the near reading the midpoint of the range? अच्छा, midpoint of the range. So first of all we need to calculate the current. V is equals to IR लगा के हम करंट कैलकुलेट कर लेंगे. V हमारे पास है 12, I हमारे पास निकालने वाले, R है हमारे पास 5 and 5, दो पैरेलल में लगे हुए हैं. 1/R total is equals to 1/R1 प्लस 1/R2. तो 1/R टोटल हमारे पास है, निकालने वाला है 1/R1 5000 प्लस, sorry, plus 1/5000. I can already tell you what the answer is. It is 2500. Because of a little trick I used, I will tell you that trick as well. So yeah, 1/5000, we have that plus 0.0002. ये हमारे पास आ जाएगा 0.0004. 1/R total is equals to 0.0004. Sorry, क्या मसला है? R total. 1/R total is 0.0004. और अगर हम आर टोटल को उस तरफ ले जाएं और 0.0004 को इस तरफ ले आए, विल वी गेट आवर आंसर डिवाइडेड बाय 0.0004, दैट विल गिव अस 2500 ओम्स. 2500 ओम्स विल बी द टोटल रेजिस्टेंस. ये मैं बताता हूँ मैंने आपको कैसे ऑलरेडी बता दिया था. इट इज बिकॉज ऑफ अ नोन ट्रिक आई यूज्ड. बिकॉज जब भी पैरेलल में एक सेट अमाउंट ऑफ व्हाट यू कॉल रेजिस्टेंसेस लगी होती हैं, यू जस्ट नीड टू डिवाइड दैट रेजिस्टेंसेस if the resistances are same. I have to mention if the resistances are same और वो पैरेलल में लगी हुई है, you just have to divide the original resistance by the number of resistances which are in parallel, and they have to, इसकी कंडीशन है, they have to be the same resistance as before. ठीक है ना? तो यहाँ दो resistances है, तो मैं divide by 2 कर दूंगा, that will give us 2500. So yeah, तो 2500 is our resistance. तो ये हम लिख देते हैं 2500. 12 divided by 2500 will give us the answer, which is 0.0048. 0.0048 is 5 milliamps. Let's confirm that 0.0048 into 1000. That will give us, yeah, that is 5 milliamps, approximately 5 milliamps. सो ये मिड पॉइंट किस वाली रेंज का होगा, किस रेंज का मिड पॉइंट 5 मिली एम्प्स है? इट विल बी द रेंज मिड पॉइंट ऑफ बी. बिकॉज 0 से 10 तक लेके अगर हम देखिए जाए तो 0 से 10 मिली एम्प्स तक का मिड पॉइंट होगा 5 मिली एम्प्स, राइट? तो बी इज द राइट आंसर. इन विच एग्जाम्पल इज द करंट 1 एम्पियर? अ चार्ज ऑफ 0.1 coulombs passes through a resistor in 100 milliseconds. This could be the answer because of the formula Q is equals to IT. Q हमारे पास कितना है? Q है हमारे पास 0.1. I हमारे पास कितना है? I हमारे पास निकालने वाला है. T हमारे पास कितना है? It is 0.1 seconds because 100 milliseconds is 0.1 seconds. 0.1 divided by 0.1 is equals to 1 amperes, and this could be the answer, which is A, because none of the other answers make sense. Question number 34. Which graph shows the relationship between current and voltage for a filament lamp? तो करंट है हमारे पास वाई एक्सिस पे, वोल्टेज हमारे पास एक्स एक्सिस पे. ये आपको ग्राफ याद होना चाहिए, लाइक इट शुड बी ऑन द टॉप ऑफ योर हेड. तो इट शुड लुक समथिंग लाइक ए, राइट? मैं इसकी आपको एक और वेरिएशन बता देता हूँ. दिस इज जस्ट अ मेमोरी बेस्ड कॉन्सेप्ट. ठीक है ना? आपने याद करना है, एंड दैट इज इट. यू डोंट नीड टू नो द साइंस बिहाइंड इट. सो मैं आपको एक और वेरिएशन बता देता हूँ इसकी. करंट अगर हमने रख दिया है एक्स एक्सिस पे और वोल्टेज रख दिया वाई एक्सिस पे, अब आप खुद अपना दिमाग लगा के सोचेंगे कैसे हम आगे इसको बनाएंगे, ग्राफ को कैसे बनाएंगे. अभी तक तो हमने ये पढ़ा है ना, करंट है हमारा वाई एक्सिस पे, वोल्टेज है एक्स एक्सिस पे. लेकिन जब वोल्टेज हमारी वाई एक्सिस पे आ जाएगा, करंट एक्स एक्सिस पे आ जाएगा,
So how would the graph look like? It would look something like this. समझ आ गई? So these are the only two variations you need to remember about this graph. So yeah, moving on. Question number 35. A 100-watt lamp is switched on for 5 hours each day for 3 weeks. The cost of 1 unit of electricity is 24 cents. How much does it cost to run the lamp for this time? कितना पैसे लगते हैं फॉर द ऑफ कोर्स आपके जो घर में बत्तियां लगती हैं उस उसकी भी एक कॉस्ट आती है. सो इट्स प्रैक्टिकली व्हाट देयर आस्किंग. तो फॉर दिस टोटल कॉस्ट के लिए हमें तीन चीजें चाहिए होती हैं. तीन चीजें बहुत जरूरी होती हैं. द पावर, मल्टीप्लाई द पावर बाय द टाइम, multiply that by the unit, cost of unit. So practically what they're asking for is cost of unit, cost is equals to energy multiplied by cost of unit. समझ आ गई? Cost, the total cost is equals to energy multiplied the cost of unit. So yeah, let's calculate that. First of all, we need the power. Power हम किस में लेंगे? Kilowatts में लेंगे, right? Power हमने लेनी है kilowatts में ताकि we can convert that into kilowatt hours. तो हमारे पास 100 वॉट्स डिवाइडेड बाय 1000 इज इक्वल्स टू 0.1 किलोवाट्स. तो हमारे पास पावर आ गई 0.1 किलोवाट्स. और टाइम हमारे पास कितना है? 5 आवर्स ईच डे फॉर 3 वीक्स. एक वीक में कितने डेज होते हैं? एक वीक में 7 डेज होते हैं एंड इट इज रन फॉर 3 वीक्स. तो 21 डेज के लिए चली है एंड एवरी डे ये 5 घंटे चली है. दैट मीन्स इन अ टोटल 105 आवर्स चली है ये. तो यहाँ हम 105 लिख देते हैं मल्टीप्लाइड बाय द कॉस्ट ऑफ यूनिट. कॉस्ट ऑफ यूनिट इज गिवन विच इज 0.24. तो टोटल हमारे पास क्या आ जाता है आंसर? इट इज $2.52. दैट इज आवर आंसर विच इज सी. क्वेश्चन नंबर 36. अ 3 pins main plug contains a fuse. A device with double insulation has a cable connected to the plug. Which part of the plug is not connected to the cable? A. Earth pin. Earth pin जो होती है that is not present in a device with double insulation. I will tell you why in a second. आगे देखते हैं. फ्यूज उन्होंने पहले ही मेंशन कर दिया कि फ्यूज इज प्रेजेंट इन दैट कॉन्फ़िगरेशन. तो हम कौन होते हैं बोलने वाले? लाइव और न्यूट्रल पिन. लाइव और न्यूट्रल पिन आर नेसेसरी, राइट? सो ऑफ कोर्स ए इज द राइट आंसर. अच्छा जी, अब मैं आपको बताता हूँ रीजनिंग. जो डबल इंसुलेशन होती है ना, द डिवाइसेस विद डबल इंसुलेशन, इट सेपरेट्स द इंटरनल कंपोनेंट्स फ्रॉम द एक्सटर्नल सरफेस. It isolates the internal components with external surfaces. So that totally eradicates the use for a earth wire. समझ आ गई? और इसका ये भी होता है इट इज अ नो एक्सपोज्ड कंडक्टिव पार्ट्स, राइट? जैसे कि मेटल हो गया, दैट इज अ कंडक्टिव पार्ट और उसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी ट्रैवल कर सकती है. इसको हमने टैकल करने के लिए क्या किया? हमने जो डिवाइसेस हैं उन्हीं को प्लास्टिक से बना दिया है. जो आउटर सर्फेसेस हैं प्लास्टिक के, जैसे ये एक हेयर ड्रायर है, इसकी जो आउटर सर्फेस है दैट इज मेड ऑफ प्लास्टिक और अ नॉन कंडक्टिव मटेरियल which will allow it to not pass any electricity. So yeah, that is it for question number 36. Let's move on to question number 37. A trolley carrying a strong magnet rolls down a ramp at a constant speed. It passes through a coil as shown. An electromotive force is induced in the coil. A graph of the EMF against time is plotted. The experiment is repeated with a different coil with a steeper ramp. Steeper ramp से क्या होता है? The speed increases. और मैं आपको इसके सारे इफेक्ट्स बताता हूँ. The trolley moves at a greater constant speed on a steeper ramp. अगर आपने इस रैम्प को ऐसे रखा हुआ और आप एक नया रैम्प बनाते हो ऐसे, of course it will accelerate faster. Which graph is produced using the coil with the least number of turns? अच्छा, ये दो चीजें दिमाग में रखें. A steeper ramp and the least number of turns. ठीक है ना? All graphs are shown to the same drawn to the same scale. First of all,
They have told us it is a different coil. Speed has increased because steeper ramp, or the number of turns have reduced because they have told us to use the least amount of turns. ठीक है ना, with the least amount of turns. अच्छा जी, अब मैं आपको Faraday's law बता देता हूँ. Induced EMF is directly proportional to the rate of the change of magnetic flux, or rate of the change of magnetic flux is increased by moving a magnet or a coil through a magnetic field more rapidly. अगर आप उसको more rapidly वो करोगे, what do you call it, move करोगे, it will increase the EMF. So the EMF increases because of larger constant speed. So we have concluded that the EMF will be larger because of the larger constant speed. अच्छा, आगे पढ़ते हैं. The number of turns are decreasing. ठीक है ना. And जो number of turns होते हैं ना, it is related in a way that if we increase the number of turns, the EMF will increase. And if we decrease the number of turns, it will decrease. अभी हमें क्या नजर आ रहा है? The EMF will decrease because the number of turns are reduced, because they have told us to use the least amount of number of turns. अच्छा जी, the EMF is decreased. एक तरफ से हमारी EMF इंक्रीज हो रही है, एक तरफ से डिक्रीज हो रही है. सो वी कैन सिंपली जस्ट कैंसिल आउट द, व्हाट डू यू कॉल इट, द इफेक्ट. टाइम पीरियड का पूछ लेते हैं. टाइम पीरियड है, अच्छा, it is a very simple concept. The time taken for the trolley to pass through the coil is shorter on a steeper ramp. Therefore, the time period will be reduced. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम टाइम पीरियड के हिसाब से दो तो हम आराम से एलिमिनेट कर सकते हैं. ए एंड बी तो हम आराम से एलिमिनेट कर सकते हैं क्योंकि उनका टाइम पीरियड नॉर्मल है. वी आर लुकिंग एट अ रिड्यूस टाइम पीरियड. तो सी और डी में से कोई आंसर है बिकॉज उनका जो टाइम पीरियड है दैट हैज बीन कट इनटू हाफ. आगे मैग्नेटिक फ्लक्स की वजह से ईएमएफ इंक्रीज हुई है और नंबर ऑफ टर्न्स की वजह से ईएमएफ डिक्रीज हुई है. तो हम वो वाला ग्राफ लेंगे जिसमें अपेरेंटली द ईएमएफ लुक्स लाइक अ लॉट मोर देन यूजुअल. और अगर हम वो वाला ग्राफ लेंगे जिसमें ईएमएफ वैसी लग रही है बट अ नॉर्मल रेट, हम वो वाला ग्राफ लेंगे जिसमें ईएमएफ नॉर्मल लग रही है. वाई? बिकॉज एक जगह हमारी ईएमएफ इंक्रीज हो रही है, एक जगह डिक्रीज हो रही है. दिस विल कैंसिल आउट द इफेक्ट. Therefore, we will take the graph which shows the EMF at a normal rate. So C is the right answer. This was a very interesting question and I had very fun, a lot of fun in, what do you call it? Explaining it. So yeah, let's move on. Question number 38. It is a repeated question. A student uses a transformer to light a filament lamp using a 230-volt AC supply. 230-volt AC supply. The lamp has a maximum voltage rating of 6 volts. So 6 volts की rating है इस लैंप की. What happens when the circuit is switched on? So first of all, this is the primary voltage, sorry, मतलब VS, VP, sorry, VP, sorry for that, VP, primary voltage. And this is the primary number of turns. So NP. This is the secondary number of turn, तो NS. और हमने क्या निकालना है? हमने सेकेंडरी नंबर ऑफ वोल्टेज निकालनी है, वोल्टेज, सेकेंडरी वोल्टेज निकालनी है. तो VS हमने निकालना है. तो रिमेंबर करें कि कौन सा हमने फॉर्मूला यूज करेंगे फॉर दिस विच फॉर्मूला विल बी यूज. वी विल यूज VS डिवाइडेड बाय VP इज इक्वल्स टू NS डिवाइडेड बाय NP. VS हमारे पास निकालने वाला है, VP हमारे पास है 230, NS है हमारे पास 20 और NP है हमारे पास 300.
So let's simply solve this. 20 divided by 300, और अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ 230 डिवाइड हो रहा है, वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो वी विल जस्ट सिंपली मल्टीप्लाई दैट. तो 15.33 सेकेंडरी वोल्टेज आ रही है. Vs will be equal to 15.33. Now what do you think will happen? अब अपना दिमाग यूज करें और बताएं क्या होगा. The maximum, I can only give you one hint, that the maximum voltage rating is 6 volts. When the maximum voltage rating is 6 volts and the secondary voltage is 15.33 volts, what will happen? Firstly, what will happen is that the lamp will shine brightly. ठीक है ना? The lamp will shine brightly. And eventually what will happen is that the lamp will pass out. pass out. ठीक है ना? तो yeah, the lamp does not light at all. That is incorrect. The lamp lights at normal brightness. That is incorrect. The lamp will be it will be uh it will shine brightly. The lamp will light dimly. No. D. The lamp lights up brightly and then goes out eventually. Acha ji. The last two questions. Question number 39. What does an alpha particle consist of? Alpha particles का जो न्यूक्लियन नंबर होता है, that is the nucleon number is 4. Nucleon number is 4. And the number of protons. Proton number is 2. So उन्होंने हमसे पूछा हुआ है, उन्होंने हमें बताया हुआ है 2 electrons. There are no electrons in a alpha particle. It is basically like the core or the nucleus of a helium particle. और helium particle के nucleus में there are no electrons. Question number part D, sorry. 2 protons and 2 neutrons only. We can calculate using the formula. Neutron number is equals to nucleon number minus the proton number. And that will give us 2. So neutron number is 2 and the proton number is 2. Therefore, B is the right answer. अच्छा जी, आगे move on करते हैं. Question number 40. This is again a repeated question from the last paper. The count rate from a radioactive source falls from 4,000 counts per minute to 500 counts per minute in 72 minutes. What is the half life of the source? Half life के लिए मैंने आपको एक simple formula बताया था. It will be the number of halves is equal to number of, what do you call it, time लिख देते हैं. Time period, the total time period divided by half life. Half life. ठीक है ना? नंबर ऑफ halves क्या होता है? मैं आपको अभी बता देता हूँ. 4,000 है. The original count is 4,000. The final count is 500. तो हमने 4,000 को उतनी दफा डिवाइड करना बाय 2 जब तक हम 500 पे नहीं पहुंच जाते. तो 4,000 divided by 2, that is 1 half, that is 2 halves, and that is 3 halves. So the number of halves is 3. The time period is 72 minutes, and the half life is what we have to find out. Second life. Half life ऊपर चली जाएगी, number of half नीचे आ जाएंगे, half life, and that would be 72 divided by 3, which is 24. 24 minutes will be the half life of this source. And that is the end of our questions, right? So I hopefully you find this video very helpful. अगर आपको ये अच्छी लगी है, अगर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा है, तो make sure to share it as much as possible to help me and help your friends. And make sure to check out my topical, like the videos I made on my topical passengers. That is a must. आपको ये, अगर आपको किसी चैप्टर में मुश्किलात आ रही हैं, you can watch the videos on that specific chapter. I'm not trying to sell you anything, but I'm just saying if you like the topical passages I make, you can buy them as well. So yeah, आप नमाज पढ़ना ना भूलिएगा, and make sure to subscribe, like and leave a comment if you have anything जो आपको नहीं समझ आई. So yeah, have a great day. Allah Hafiz.